Assalamu alaikum dear students of class 3. Welcome to your English class. Open your ORC book page number 87 and this is story 12 Mr. Sharp's fish. Dear students, he is Mr. Sharp and he likes fish very much and she is his wife and she is very happy to see a nice fish. Mr. Sharp asked his wife to cook this fish for dinner. So let's read the story. Mr. Sharp loved the fish. He did not keep them as pets. He liked eating them. Mr. Sharp worked hard when he had some money. He always went to the market. He bought fish for his dinner. Sheena, Sheena, he shouted when he got home one day. Look at this fine fish I have bought from the market. What a beauty! He held the fish up to his wife could see. He held the fish up so his wife could see. Can you see he is showing the fish to his wife? Please cook it and we shall eat it for dinner tomorrow, said Mr. Sharp smiling. मिस्टर शार्प फ़िश लेकर आए हैं और अपनी वाइफ को कहते हैं कि ये फ़िश इसको पकाओ और हम इसको डिनर में खाएंगे। और मिस्टर शार्प बहुत ही खुश हैं और उसकी वाइफ भी फ़िश को देख के बहुत ही खुश हो रही है। मिस्टर शार्प को फ़िश बहुत पसंद है और उन्हें हर वक्त फ़िश खाना बहुत अच्छा लगता है। Early the next day, Mr. Shah went to work as usual. Sheena, his wife, finished the housework and then cooked the fish. Soon the smell of fried fish filled the house. The smell crept out into the garden, gently drifted down the road and entered the houses of Sheena's friend. Two of them came to see her not because of the smell but because they wanted to find out if she was well and happy. "Oh, how nice of you to call," exclaimed Sheena when she saw her friends. "Do stay and have some lunch." "How kind," said the first friend. "Are you sure? And what have you cooked today?" asked the other. "Not fish by any chance?" "Yes, it's fish, but that is for my husband," said Sheena. Then, after a moment, she added, "How did you guess I'd fried some fish for lunch? Doesn't it smell wonderful?" Sheena and her friend sat down to eat. Half an hour later, there were 3 empty plates on the table. डियर स्टूडेंट्स, शीना की फ्रेंड्स जो हैं, शीना जब फ़िश को फ्राई करती है लंच के लिए तो उसकी खुशबू इतनी फैल जाती है और उसकी फ्रेंड्स के घर तक पहुंच जाती है और वो उससे पूछने आती हैं कि क्या तुम ठीक हो। तो उनको पता चलता है कि ये फ़िश की इतनी अच्छी स्मेल आ रही है। तो ये सारे इनके घर आ जाती हैं और उनको कहती हैं कि तुम ठीक हो, पूछने आ जाती हैं। तो शीना ने कहा, अच्छा हुआ कि आप लोग आ गए। तो उनको जैसे सलाह करती है कि चलें आप लंच करके फिर जाइएगा। तो वो कहती हैं कि शायद क्या तुमने लंच के लिए फ़िश तो नहीं पकाई? तो शीना कहती है, हाँ मैंने फ़िश ही पकाई है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैंने फ़िश पकाई है? तो उनकी फ्रेंड को पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पे फ़िश पकी है, लेकिन वो शीना से कहती हैं कि क्या उनसे कंफर्म करती हैं कि क्या तुमने फ़िश तो नहीं पकाई? तो शीना कहती है कि क्या मैंने इतनी अच्छी फ़िश पकाई है और आपको स्मेल नहीं आ रही फ़िश की इतनी अच्छी है? तो वो कहती हैं, हाँ चलो ट्राई तो करके देखते हैं। फिर हाफ एन आवर लेटर, थोड़ी देर बाद, डाइनिंग टेबल पर तीनों प्लेट्स खाली पड़ी हुई होती हैं। There was also an empty dish and plenty of bones. All the fish was gone. That evening, Mr. Sharp hurried home. "I'm ready for dinner, dear wife," he said, rubbing his hands together and sitting at the table. "What a lovely smell! I am starving." Sheena served her husband some noodles and boiled vegetables. Mr. Sharp looked most surprised. "What is this?" he said, picking up the noodle with his fork. "And what are these?" जब मिस्टर शार्प जो है खाना खाने के लिए बैठते हैं तो उनको शीना उनके आगे सम बॉयल्ड वेजिटेबल्स और नूडल्स रखती है। तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं कि यार ये क्या है, मैं तो यहाँ पे फ़िश खाने के लिए बैठा हूँ और तुमने मेरे सामने ये नूडल्स और वेजिटेबल्स रख दी हैं, कहाँ है फ़िश?
Open book page 90. He stabbed the boiled vegetables with his knife and looked at his wife. Noodles and vegetables, mumbled Sheena, suddenly finding something interesting to look at on the floor. This was what we are having for dinner tonight. But where is the fish I brought yesterday? Asked Mr. Sharp angrily. Oh, the fish! The naughty cat ate it, replied Sheena, bending her head over her plate. Mr. Sharp turned red. He gripped his knife and fork so tightly that his knuckles and turned white. But he said nothing. The following week, Mr. Sharp came home with another large fish. A fish for my dinner tomorrow, he said to his wife, and keep the cat out of the kitchen. But when Mr. Sharp got home the following day, his wife once again had no fish to give him for dinner. Mr. Sharp turned purple and just as he was जैसे ही मिस्टर शार्प ने शीना से पूछा कि फ़िश कहाँ है, मैं तो फ़िश खाने वाला था, तो शीना ने बहुत घबरा गई और उसे शीना ने उनसे कहा कि ये जो कैट है ना, ये बिल्ली है, ये खा गई सारी फ़िश, वो खा गई बिल्ली। तो मिस्टर शार्प बहुत ही गुस्सा हो गए और अगले ही दिन फिर दोबारा दूसरे वीक वो दूसरी अच्छी सी फ़िश लेकर आते हैं और कहते हैं इसको मेरे लिए डिनर के लिए पकाना, और ये जो कैट है इसको हमारे किचन से दूर रखना और कैट को कहीं छुपा देना, और मुझे ये फ़िश डिनर में चाहिए। फिर उसके बाद जो उसकी वाइफ ने उसे फ़िश नहीं देती, दोबारा वो फ़िश नहीं खा पाते और दोबारा उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। मिस्टर शार्प टर्न पर्पल मीन्स मतलब पहले रेड हो गए, उसके बाद पर्पल हो गए, मतलब गुस्से से लाल पीले, जैसे कहते हैं ना हम गुस्से से लाल पीले, वो हो गए। तो गुस्से में मिस्टर शार्प पर्पल हो गए। He was going to explode. Sheena cried, "What can I do? That naughty cat ate the fish." Mr. Sharp was very, very angry indeed. "The cat ate it," he whispered. "Are you sure?" "Yes," replied Sheena hurriedly. "The cat took it." Mr. Sharp jumped up from the table. "I shall deal with that cat right now," he said, and he rushed out of the dining room. He looked all over the house and in the garden. He looked down the road, but the cat was nowhere to be found. Mr. Sharp returned to the dining table and sadly ate his dinner in silence. That night, Mr. Sharp had a nightmare. He dreamed that he was he was a very large fish. The next week, Mr. Sharp brought home a huge fish. "Look at this beauty," he said, placing it carefully on the kitchen table. "It weighs exactly 2 kilos. Now don't let the cat get it. I shall have it for my dinner tomorrow." तो मिस्टर शार्प ने उस कैट को बहुत ढूंढा, लेकिन कैट कहीं नहीं मिली। फिर वो चुपचाप अपना खाना खाने लगे। फिर अगली रात वो ख्वाब में भी एक बहुत बड़ी फ़िश देखते हैं और दूसरे सुबह वो बहुत बड़ी फ़िश लेकर आते हैं। फिर अपनी वाइफ से कहते हैं कि ये देखो, ये कितनी बड़ी है, कितनी अच्छी है, और ये पूरे 2 किलो की है, और इसको बिल्ली को खाने मत देना, और ये मुझे कल डिनर में चाहिए। Sheena cooked the fish, but again her friends came. They ate up all the fish. The next day there was no tasty fried fish for Mr. Sharp. "Where is the fish?" he asked angrily. "The naughty cat ate it," replied Sheena. This time Mr. Sharp found the cat. He picked up gently and took it to his wife. "Come with me, please," he said to his wife. Mr. Sharp marched out of the house carrying the cat. His wife followed closely behind. Mr. Sharp entered the shop next door. He went straight to the vegetable section and found a weight machine. So he found a weighing machine. Weighing machine is another thing. Weight machine is another thing. डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी चीज़ को तोलते हैं तराजू में तो हम उसको वेइंग मशीन कहते हैं। वेट मशीन में हम ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है तो हम उसको वेट मशीन कहते हैं। तो ये अलग है। सो डियर स्टूडेंट्स, वेइंग मतलब
तोलना, मतलब मशीन तो सेम ही होती है। अब वेट मशीन में हम किस तरह वेट चेक करते हैं, ये हम वेइंग करते हैं। क्या करते हैं? वेइंग करते हैं। आपने शॉप्स में अक्सर देखी होगी, शॉपकीपर्स उसके ऊपर चीनी वगैरह रख के और उसका नंबर्स चेक करते हैं कि हाँ ये इसकी केजीज़ क्या हैं, ये कितने ग्राम की है, तो उसको हम वेइंग कहते हैं। ठीक है, ये कैट को मिस्टर शार्प भी कैट को शॉपकीपर के पास लेके गए, उसको वेइंग मशीन में रखा और उसके नंबर्स आ गए कि ये कितने केजी की है। So he put the cat on weighing machine and bent over to peer at the dial. The cat sat on weighing machine. It was wondering what was going on. The shopkeeper came to see what was going on. He stood there with a puzzled look on his face. Mr. Sharp pointed to the dial on the weighing machine. He turned to his wife and said, "Look, what does that tell you?" "What do you mean, dear?" asked his puzzled wife. "What is the weight?" asked Mr. Sharp. Sheena studied the dial. It says 2 kilos, she said. "Yes, it does," said Mr. Sharp. "My fish weighed exactly 2 kilos. This cat weighs 2 kilos too." "You said that my fish is here. Then where is my cat?" Sheena had no answer. ये देखिए, ये है वेइंग मशीन। कैट इसके ऊपर बैठी है और बड़े मज़े ले रही है। उसको ये खुश हो रही है कि पता नहीं कोई अच्छी सी चीज़ होने वाली है। मिस्टर शार्प कैट को इस वेइंग मशीन के ऊपर रखते हैं और डायल को देखते हैं, उन नंबर्स को देखते हैं और अपनी वाइफ से पूछ रहे हैं कि देखो ये नंबर्स क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कैट इज़ 2 किलोज। ये जो बिल्ली है वो भी 2 किलो की है। तो मिस्टर शार्प कहते हैं, अच्छा ये बिल्ली भी 2 किलो की है, मेरी फ़िश भी 2 किलो की थी, तो अगर इसकी पेट में मेरी फ़िश नहीं है तो कहाँ है मेरी फ़िश? और मिस्टर शार्प की वाइफ के पास कोई आंसर नहीं है। शीना हैड नो आंसर। तो इस स्टोरी से हमें ये पता चला कि जो शीना थी मिस्टर शार्प की वाइफ, वो अपने उसका हस्बैंड जो भी फ़िश लेके आता था वो अपने फ्रेंड्स को खिला देती थी। सारी फ़िश अपने फ्रेंड्स को खिला दी और उसने अपने हस्बैंड को नाराज़ कर दिया। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ऐसी सिचुएशन पैदा करनी चाहिए, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम कभी भी दो लोग हों, कभी हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो हम सबको खुश कर सकें, हम दोनों को खुश कर सकें। शीना को क्या करना चाहिए था? शीना को अपने फ्रेंड्स को भी खुश करना चाहिए था और शीना को अपने हस्बैंड को भी खुश करना चाहिए था। किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाहिए था। तो उस फ़िश को इस तरह से करती, इस तरह पकाती कि उसकी फ्रेंड्स भी अच्छे से खा लेती और उसके हस्बैंड भी खुश हो जाते। लेकिन शीना ने तो बहुत गलत किया। वो सारी फ़िश अपने फ्रेंड्स को दे दी और ऊपर से झूठ बोला। तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस तरह से इसके हस्बैंड को कितना दुख हुआ, वो इतने प्यार से फ़िश लेकर आता था, लेकिन शीना ने उनसे झूठ बोला कि नहीं, कैट खा गई। अगर आपने कोई चीज़ किसी को दे दी है तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको सच बोलना चाहिए। तो इस स्टोरी से हमें ये सबक मिला है कि वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ एंड वी हैव टू कीप एवरीवन हैप्पी। Now open book page 95, exercise C, words and meaning. Which statement are true? The friends came when they smelled the fish. The fish was cooked for Mr. Sharp's dinner. The cat weighed the same as the fish. Mr. Sharp liked noodles. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये सेंटेंसेस हैं। अब हमें आपको ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं और जो सेंटेंसेस सही हैं उनके साथ आपको टिक का निशान लगाएं और जो सेंटेंसेस गलत हैं उनको आप क्रॉस का निशान लगाएं। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आपने ये स्टोरी को अच्छे से पढ़ना है और ये स्टेटमेंट को टिक और क्रॉस का निशान लगाना है। And dear students, write few lines about your favorite food. As my favorite food is also fish, and I like the fish very much because it's very tasty and it's very yummy. Right? That's like you have to write few lines about your favorite food. Whatever food you like, just write it about on your notebook.